Hi, welcome to a new episode of Sportsy. Let's aim sports. We are starting the episode with firstly wishing you all a very, very happy and mindful International Women's Day. On this special day today, we have with us a special lady, Shital Mahajan Rane. Shital is an Indian extreme sports person, a skydiver, and a holder of 6 world records and 18 national records in the sport. She is known to be the first woman to have done her first ever parachute jump without any training over the geographical North Pole in the minus 37 degrees Celsius from 2,400 feet, and the first accelerated free fall jump without any trials over the Antarctica, South Pole, from 11,600 feet in the minus 38 degrees Celsius. She became the youngest woman to jump over both North and South Pole, and the first woman jumper to perform it without trials. The government of India honored Shital in 2011 with the 4th highest civilian award of Padma Shri. Shital, who is driven by the adrenal, is married to Rane, a software engineer working in Finland. The wedding ceremony was performed on the hot air balloon at 600 feet above the ground in 2008, a feat which has been recorded in the Limca Book of Records. The first Indian woman to perform a wingsuit jump, Shital is a US certified A, B, C, and D skydiver and trainer, and is the first Indian civilian woman diving coach who has also dived in the saree while completing her world record of diving across all 7 continents. Shital has also led a team of 85 Indian skydivers to achieve a record of maximum tandem jumps in an hour. The jump performed on 25th August 2014 in Spain. Her jump from 13,000 feet performed on 19th April 2009 also is the record for the highest in the women's category. She's also credited with a free fall jump from a hot air balloon at 5,800 feet and a jump at 24,000 feet. Shital Mahajan is a founder of Phoenix Skydiving Academy, a skydiving training center based in Pune. Our academy established in 2012 provides training facilities for aspiring students and prepares students for skydiving competition around the world. So on this special episode of International Women's Day, please welcome a lady who has got so many records. She's the woman of substance, completed over 766 jumps, someone who has 6 world records and 18 national records, the Queen of Sky, Shital Mahajan. Hi, Shital. It is so great to have you on Sportsy. Let's talk sports. Yes, thank you for inviting, and I'm so excited today for the interview. Excitement is a very small word for you, somebody who has lived her life on adventure. But believe me, it is our excitement to host you today on the special Women's Day. So, firstly, wish you all the ladies, amazing ladies, a very happy Women's Day and a mindful Women's Day. Yeah. Yes, wish everyone happy Women's Day, and something special is on the way today. Yes, and so much of looking forward to that. And before that, a small chat with you on this channel. As you know, we talk about making sports aspirational, inspirational, and motivational. And believe me, there is no bigger motivation, inspiration than a lady who is a Indian extreme sport person, a skydiver, a holder of so many world records that we get to hear from you. Shital, my first question, with so many things to hear from you, what got you attracted towards the skydives and free falls? It is not something common that we get to do in India, specifically when we grow up. So what got you into that? Actually, since I was a kid, I was having, kida, that I want to do something in my life, but I was not having an idea that what that something should be. So I tried drawing, painting, and then in the school, all school, I would say in the school, all the sports, in that swimming, badminton, table tennis. And I achieved a state level also in the sports, in swimming also, in badminton also, in table tennis also. But I was not getting that feeling like, okay, I should be doing that, as my career. When I was in 10th, and my father said, okay, you have now you have to choose one field, like science or commerce. And he said that, okay, commerce, because
he thought that क्या करोगे ज्यादा पढ़ के कर आगे पढ़ के मतलब what your goal will be, like okay whatever you will achieve in education, बाद में तो घर में ही you have to take care of the kids and you'll be in that square box and living your life limited. So I said that is your thinking. Means I told my father I don't want to live my life in the box. I want to achieve something different. He said, okay, but it's then if you want to explore the world, then also commerce is the best option for you. Because science karege to you will be not able to pursue all this stuff. I said it's not like that. I want to do science only. Then when somebody try to stop you for doing something and then you feel aggressive, like why you're stopping me? And that feeling came. I said, okay, I'm gonna take science only. Whatever you want to do, So I said, okay, fine. Then I took a science, and fortunately, I got a friend in 12th. When I was in 11th. I'm sorry, after 11th, I was in 12th. I got a friend, Jyoti Sumriya, and because of her, I got to know about her brother, Squadron Leader Kamal Singh Obad sir, and he was in National Defense Academy, and he was giving a training to cadets about skydiving and all that. So I was like, okay, he's my friend's brother, and he's doing skydiving, and बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक कान से सुनते हैं और एक कान से छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं, फिर आधे घंटे में 2 घंटे में भूल जाते हैं. लाइक दैट हैपेंड. ओके, अच्छा इज अ स्काईडाइवर, अच्छा ओके उन्होंने स्काईडाइविंग करी है, उनके बारे में भी पढ़ा. दैट डिडंट स्ट्राइक मी दैट टाइम. बट जैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हो, like that I saw his one interview and I was like, oh shit, he has done such a great thing and he's my friend's brother. And मुझे क्यों नहीं ऐसे लगा, काइंड ऑफ. फिर उनका जो वीडियो देखा ना, ही इज एक्चुअली स्क्वाड्रन लीडर कमल सिंह ओबड़ इज द फर्स्ट इंडियन मैन हु डिड स्काई डाइविंग ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो उनके बारे में जब मैंने न्यूज आर्टिकल में पढ़ा एंड मुझे बुरा लगा कि मैंने उनको कैसे नहीं पहचाना. बट देन आई रियलाइज he never said anything about him. He is such a normal person. So I went to my friend's house, Jyoti's house, and I told her like, तुम्हारे भैया ने तो इतना बड़ा काम करा है, तूने बताया नहीं. बोलती बताया जैसा क्या है उसमें, like I said, तू पागल है क्या, तुम्हारा भाई इतना he's a great personality. I want to meet him. फिर मिले, मैंने वो भैया को भी बोला, भैया आपने इतना बड़ा काम किया, आपने बताया क्यों नहीं. मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे अपने मुंह से मेरी तारीफ करूं. So he's such a down to earth person, and I was like, sir, आपने जो भी करा है ना, वैसा मुझे भी करना है. So he said that yeah. And so छोटे बच्चों को बोलते ना हमें कि मुझे भी आपके जैसे बनना है, वैसे my reaction was, and his reaction was, अच्छा छोटा बच्चा कोई है ऐसे बोल रहे कि करना है, he was like, he toppled me like, okay fine, next time. But he was not knowing that I will trouble him or till the time I get my answer. And I was behind him for 1.5 years. Every weekend I used to go to his house and please tell me, मुझे कोई काम नहीं था, honestly. I was behind him until that time. My father and mother, my family was not having any clue मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, because I used to keep doing something since my childhood. So they said that अच्छा, पहले मुझे 10th के बाद मुझे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जाना था, उसके लिए मना कर दिया, कॉमर्स ऑप्शन दिया था. तो मैंने साइंस चूज करा. ऑल ओवर माय ड्राइंग, पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग. आई वाज अ पेंटर बाय द वे. आई डिड एग्जीबिशंस इन गैलरीज बिफोर माय 10th, टिल माय 10th. बट मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स भी छोड़, जेजे में मुझे जाना था. आई गॉट सिलेक्टेड, बट माय फादर सेड 5 साल मुंबई नहीं छोड़ेंगे, पुणे में ही जो करना है करो. तब ये स्काई डाइविंग का जब ड्रीम आया, घर जाके जब बताया, माय फादर सेड बेटा जेजे में एक मैं एटलीस्ट मैं तुझे जाने देता, नॉर्थ पोल स्काई डाइविंग चांस ही नहीं है, जस्ट भूल जाओ. तो आई सेड अब ये है, इसमें मुझे 5 साल नहीं जाना है, 5 days or 6 days और 1 week मैक्सिमम, बट मुझे वहां जाना है. माय फादर सेड हमारे पूरे खानदान में कोई एयरक्राफ्ट में नहीं बैठा है, तुझे एयरक्राफ्ट में बैठना नहीं है, तुझे उसमें से कूदना है, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के. Oh shit. Then my father said, not possible, just forget about it. So it took me 1.5 years for convince him that okay, North Pole क्या है, मतलब South Pole क्या है, North Pole पे क्यों जाना है. And when I spoke with Kamal sir, he gave me all idea कि नॉर्थ पोल पे जाने के लिए खर्चा कम है, साउथ पोल पे जाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है. सो नॉर्थ पोल पहले प्लान करते हैं, फिर नॉर्थ पोल पे जंप करेंगे. Honestly, just now I said the sports management, the sports manager होते हैं, वैसे हमें कोई आइडिया नहीं था.
करेक्ट। एक किसी नए स्पोर्ट्स में मैं एंटर कर रही हूँ, हाउ टू गेट द स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप का एस भी नहीं पता था। सो माय फादर सेड बेटा मेरे 18,000 रुपए सैलरी है, जो ये नॉर्थ पोल जाने के लिए 15 लाख रुपए खर्चा, पैसा आएगा कहाँ से? आई कैन नॉट टेक अ लोन, मुझे इतना लोन भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट टू डू? आई सेड स्पॉन्सर ढूंढते हैं ना, यू नो। एंड ही वाज लाइक स्पॉन्सरशिप मिलती कैसे पता है कभी? मैंने नहीं पता, बिकॉज मैं पुणे से, मेरे फर्ग्यूसन कॉलेज इतना ही मेरा रूट था, उसके आगे कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। एंड ही वाज लाइक कि तुझे नॉर्थ पोल जाना है, स्पॉन्सर्स ढूंढने, यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स जो हमारे ना आसपास भी किसी ने करी नहीं है। आई सेड लेट्स डू इट, एक्सप्लोर इट। सो माय फादर सेड, पहले तो मना कर दिया था, 1.5 मंथ के बाद जैसे हाँ बोला उन्होंने, उसका रीजन था, आई इंट्रोड्यूस माय फादर टू कमल सर, माय फैमिली सबको लेकर गए, उनको बताया कि ये कमल सर, इन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल किया है। एंड कमल सर सेड दैट इसको जो भी हेल्प चाहिए मैं करता हूँ, आप एज अ फैमिली इसको सपोर्ट करो। माय फादर वाज सो शॉक्ड, एक अननोन बंदा जो पहचान का भी नहीं है, वो बंदा हेल्प करने के लिए तैयार है। एज अ फादर व्हाई आई कांट? Then I said, I didn't say anything. He took his decision, and I was like so happy that finally my father is ready to stand by me. And you know, होता है ना, when your father stands by you, you don't need anyone in the world, you know. मतलब हम कहते हैं मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं मतलब वो फीलिंग तभी आती है ना, तो मैं किसी के बाप से नहीं डरती। माय फादर इज लाइक इज नेक्स्ट टू मी, यू नो, स्टैंडिंग बाय मी. So it got easy for me to conquer, but till that moment even my family was little in negative thought. लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, या कर ये भी नॉर्थ पोल करके क्या करेगी? इनफैक्ट माय नॉट माय, सबके प्यारे रिलेटिव्स होते हैं जो ऐसा कुछ करते टाइम में ना पोकिंग करते हैं। इवन माय रिलेटिव्स केम, दे सेड दैट अकेली लड़की है, नॉर्थ पोल जाएगी, हाथ पैर टूटेगा तो कौन शादी करेगा, यू नो। मेरी शादी की मेरे घर वालों को चिंता नहीं थी, बट उनको चिंता थी, यू नो, काइंड ऑफ लाइक आई वाज फीलिंग लाइक क्यों मेरी शादी कहाँ यार, मैं अभी आई वाज जस्ट 18-20 जस्ट, दिस गाइज आर थिंकिंग अबाउट माय मैरिज। एंड मैंने बोला मैरिज करना भी है तो मैं सोचूंगी करना भी है, नहीं है कुछ अचीव करने के बाद आई विल डू समथिंग अबाउट मैरिज, थिंक अबाउट समथिंग। बट अब हमारे जो लवली रिलेटिव्स होते हैं वो, नहीं नहीं आपको सोचना चाहिए, अगर इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो लड़का भी वैसा ढूंढना पड़ेगा, सो यू शुड नो, आई मीन आई शुड लिमिट माई सेल्फ सो दैट आई शुड गेट अ ग्रूम लाइक द वे पीपल वांट। तो वो बहुत मुझे चिढ़ हुई थी तब जाके कि अब मैंने बोला अब मैं नॉर्थ पोल में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो यू नो टू ट्राई टू फिक्स यू इन वन बॉक्स, तो एक बॉक्स में बिठाने की जो कोशिश करते हैं ना, वो मुझे बहुत मेरे नर्व्स पे जाता था। एंड आई विल से थैंक्स टू देम ऑल दोस पीपल, बिकॉज उन्होंने अगर वैसे बिहेव नहीं किया तो आई डोंट थिंक मुझ में से इतना कुछ अच्छा बाहर निकलता। क्योंकि दिस पीपल ट्रिगर्ड मी, लाइक होती ना उंगली करना, उंगली किया बहुत ज्यादा, एंड दैट्स व्हाट द रिजल्ट इज मी, यू नो, आई विल से। But my father also was not having clue that उनकी बेटी इतनी बड़ी ब्रैट हो सकती है, बिकॉज एक कॉलेज गोइंग सारा पंजाबी सूट पहन के, यू नो, जो पापा बोल रहे मम्मी बोल रहे वही सब करने वाली लड़की। देन वंस आई वाज इन फर्ग्यूसन कॉलेज, इवन माय फादर सेड लाइक फर्ग्यूसन कॉलेज में भेज रहा हूँ, फर्ग्यूसन इज लाइक टॉप नॉच कॉलेज, बट वहां पे लड़की होती है, हमारे घर में लड़कों से बात करना अलाउड नहीं था, आई वाज फ्रॉम गर्ल्स स्कूल। तो उसमें भी उनको टेंशन, माय फादर इज टू कम आउट ऑफ माय फर्ग्यूसन कॉलेज का मेन गेट, माय लेक्चर्स के बाहर खड़े रहते थे, मैं कहीं से बात तो नहीं कर रही हूँ, घर आके मेरा क्लास होता था, आई सॉ यू टॉकिंग विद सम गाय। मेरा मतलब मैं ये सोचती थी कि यार फर्ग्यूसन में डाल रहे और किसी से बात भी नहीं कर सकती, तो चीटिंग, यू नो, काइंड ऑफ फीलिंग। और उस टाइम में मैं बोल रही हूँ कि मुझे नॉर्थ पोल जाना है, सो इन दैट again you need to talk to boys or some people, you know, in a outside. So he used to come with me as a protector, you know, my bodyguard kind of, and he used to speak everywhere. I said I'm happy as long as you are doing the talk stuff. So but कुछ मोमेंट पे उससे बात नहीं हुआ करती थी, तो ही वाज लाइक अच्छा तू बात कर ले, यू नो, कहना तू बात कर। तो फाइनली नॉर्थ पोल का प्लानिंग हुआ, इट वाज प्लान इन 18th April 2004, sorry, it was planned on 12th April 2004, and sponsorship के लिए हम प्लान कर रहे थे। We approached 237 companies and all over Maharashtra. We've been personally in lots of companies, marketing heads, meeting and this and that. एक कंपनी ने बोला कि ओके हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, स्पॉन्सर करने के बाद आपकी जंप भी हो गई, और जंप करने के बाद आपकी डेथ हो गई, तो
I said, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, I cannot control that. तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना. We should not sponsor you if you don't know 100%. मैंने बोला अगर मुझे 100% वापस आने की अगर गारंटी होती तो मतलब मैं आपको पहले ही बता देती. But I really don't know myself. North Pole is unpredictable place जहाँ पे जमीन ही नहीं है. समुंदर के ऊपर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े के ऊपर स्काई डाइविंग कर रही हूँ मैं. And that is gonna be my first jump. It's तो उन्होंने बोला कि आप क्यों करना चाहते हो? It's a suicide attempt. So I said, that's what you think. It's not for me. I know that I can do it. Just have a faith. But nobody showed that faith, which showed by Tata family. My father was working for Tata's and Ratan Tata sir के office में हमने application भेजा था 4 महीने पहले जादेवारी में. And 4 April 2004, it was 444. I got a call from Tata's. I can't forget that date. It's a unique date, and I got a call from Tata's that have you got the sponsorship? I said no. They said that can you come to Tata office? We want to discuss about your sponsorship. I was like, ये पहले sponsor है जिन्होंने खुद होके phone किया, you know. So I was like, okay, let's go. We went to Mumbai, and Mumbai में टाटा ऑफिस में गए. एक राउंड टेबल मीटिंग चल रहा था, बड़ा उनका बोर्ड मीटिंग कुछ तो. सर मैं फादर सर बोर्ड मीटिंग में तेरे बारे में डिस्कस हो रहा है, मैं एक छोटा एम्प्लॉई हूँ. एंड ही वाज फीलिंग प्राउड दैट बेटी के बारे में उनके बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं. सो हमें बाहर आके बताया कि ओके आपको स्पॉन्सरशिप के लिए वी आर रेडी टू स्पॉन्सर यू, बट वी कैन स्पॉन्सर ओनली 5 लाख रुपीज. आपको हमें 10 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप चाहिए था. They said that we cannot give you 10 lakh rupees. So what is your, what will do for the 5 lakhs? My father said, आप ही हो, you are the vice president of the company and you can give me my provident fund 5 lakh rupees in advance और थोड़ा सा जो भी है तो आप मुझे मेरा provident fund में से 5 लाख रुपए दे दो और 5 लाख रुपए स्पॉन्सर कर दो. my daughter can fly for the record. So जो रामाकृष्णन सर थे vice president, he was so shocked. He said that please have a seat. I will go and again discuss. फिर से वो उनके पास envelope लेकर आए थे. But इन्होंने he asked my father that if अगर आपको पता है आप क्या मांग रहे हो, आपका provident fund मांग रहे हो, which is like आपकी after retirement की पूंजी है वो, you want to give that also to your daughter. So हमें ज़्यादा ये लग रहा है कि you should not do that. मेरे पापा ने उनको एक आंसर दिया कि अगर यही रिकॉर्ड करने के लिए दूसरे देश की अगर बेटी गई, लड़की गई, तो हम क्या करेंगे? वो जंप करके आने के बाद हम क्लैप करेंगे उसके लिए. पर यही अगर जंप करने के लिए हमारे देश की कोई लड़की जानी है तो मेरी बेटी क्यों न जाए? तो हम हमारे बेटी के लिए ही क्लैप कर सकते हैं ना. तो वो उनको अच्छा लगा बोला हुआ. एंड ही सेड दैट आई नो आप एज अ फादर यू आर हैविंग दैट फीलिंग दैट मेरी बेटी नहीं करना चाहिए और मेरी बेटी नहीं इंडिया के लिए करना चाहिए. So that is the reason we want to sponsor full amount. Wow. And they did it. And he was having an envelope in his hand already. But he asked that tricky question to my father. He gave the check. And after that, I went to North Pole. I did my jump. 12 तारीख को मेरी jump थी. Weather was bad. Then again, it got postponed to 18. My visa was expired. It was big story. And but managed everything. And I did my jump. I was there on North Pole almost for 7 to 8 days. Amazing experience. 7 days month and 7 days nights जो होती है, I experienced there. 6 दिन ही था. There was no night at all. Sunset ही नहीं होता. It's amazing feeling. And I did my first jump on 18th April 2004 over the North Pole from 2,400 feet in minus 37 degrees Celsius. And that was my static line jump. As soon as I exit the aircraft, a helicopter, my parachute opened automatically. That's called a static line jump. And I became first woman in the world who did first jump on the North Pole. Wow. Shital, So, it is, I don't know, it's like, I don't even want to stop you while you're speaking, but it is like, you gave me goosebumps while talking. It's as good as I was sitting there and experienced the whole thing. It's so amazing. And I think no better message on the Women's Day about what your dad gave it that day, right? I think the whole thing that happened and the first jump without training, finishing it, and after that more than 750 jumps. I think that fire, the ungli jo kiya, I think बहुत बड़ा किया आपके relatives ने and everybody around. अभी भी करते हैं, अभी भी, you will not believe. So I think please उनको हमारी तरफ सबसे अगर से थैंक यू बोल देना. अगर वो नहीं करते तो आज ये नहीं होता.
and we wouldn't have been sitting with somebody who has done so many things, so many records, 18, 19 world records, Limca Book of Records, and what all that we can talk about, and also Padma Shri obviously sitting with us. But while you're talking about all this thing, I want to come to one kind of a fun part. You said that अगर ये सब करेगी तो शादी कौन करेगा? And you did something which was very unusual. You actually got married and that also record, Limca Record. We got married in a hot air balloon in some, I don't know how many feet above the ground. That people say that शादी में वो पाँव जमीन पे नहीं रहते, लेकिन आप तो हस्बैंड को लेके इतना ऊपर चले गए. So what was that all about? It's like actually जब शादी करने का नॉर्थ पोल हो गया, then I said I want to do skydiving on South Pole. I did then South Pole ka planning kiya, and fortunately that time our president was APJ Abdul Kalam sir, and I asked his help to get some permissions over Antarctica, and some मेरे साथ कुछ Navy के instructors जाने थे, उनको deputation पे लेके जाना था, and I got that help also. We did the planning of jump, and that jump cost me almost 1 crore. That time जिस पहले तो 10 लाख के लिए 10 लाख रुपए के मतलब उतने पैसे नहीं थे, अब तो 1 करोड़ का टास्क था. That is the reason I did North Pole first. I told you initially. So South Pole भी plan किया, South Pole के भी sponsors मिले. It took 1.5 years for organizing that. And in that time, my relatives, my family, everyone got pissed off literally. That बेटा अभी education भी हो गया, North Pole हो गया, अभी South Pole plan कर रहे हो. ओके बस साउथ पोल के बाद शादी करनी है. I said okay, I said आप जिससे बोलोगे उससे शादी कर लूंगी, पर मुझे अंटार्कटिका करने दो. Let me do my second jump of my life over the Antarctica, then whatever you say, that will be east for me. So my father said okay. Then अंटार्कटिका का प्लान किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. वी फेस लाइक ट्रिमेंडस. लास्ट डे तक ये डिसाइडेड नहीं था कि जा सकती हूँ. अंटार्कटिका जाने के बाद भी ऐसा सीन हो गया था कि जंप नहीं हो सकती, बट जंप सक्सेसफुली हुई. 16 December 2006 I did second jump of my life, but first accelerated free fall jump. उसमें फ्री फॉल जंप का पहला जंप होता है जो 2 इंस्ट्रक्टर के साथ करना पड़ता है. सो 2 इंस्ट्रक्टर्स इंडियन नेवी के लेकर गई थी, उनके साथ वहां पे जंप किया. And Indian Navy supported very much for that. My sponsors supported me. Almost 80% amount was sponsored by my sponsors. 20 lakh rupees. My father mortgaged the house and he gave me 20 lakh rupees for that expedition. And finally, Antarctica हो गया. Then जैसे ही हो गया, after celebration done, paper में आ गया, newspaper interview सब कुछ हो गया. My father said, एक फोटो लेकर आ गया, ये लड़का कैसा है? I said अच्छा है, but ask him if he is allow me to do skydiving in future, I will marry him. ये तो बंदे ने बोला नहीं, skydiving तो भूल जाओ. I said then भूल जाओ इसको. Then you must have seen शादी.com जैसे ads आते हैं, उसमें फादर फेटे लेके घूम रहे एंड लाइक लड़कों के पीछे, एंड लड़की को पूछते हाउ इज ही काइंड ऑफ. वो सीन हमारे घर में चल रहा था. माय फादर रजिस्टर्ड माय नेम ऑन saree.com. ही वाज लुकिंग फॉर द ग्रूम्स, एंड वन डे इवन आई वाज लाइक प्लीज बैठ जा यार, तू चैट कर लड़कों से, या फिर सीधा बता दे तेरे को किसी से शादी करनी है. तो आई सेड देयर इज नो समथिंग लाइक दैट, बट आप बोलोगे इससे शादी कर लूंगी. देन दे फाउंड अ गाय, my husband Rane, and we got a proposal, and my husband came to see me, and I asked the first question, I will marry you, but is it okay if I do my skydiving in future? He said that yeah, जो करना है करो, I will stand by you, even because he himself did one jump before meeting me. तो उन्होंने खुद jump करी हुई थी. I said that he's a perfect person because he himself knows that what is skydiving. जितने भी रिश्ते आए थे किसने skydiving करी हुई नहीं थी. He was the first one. So I said that how it feels, it's amazing. I asked him, like, he came to see me, like he came to interview me, but I took his interview. अच्छा कैसे लगा skydiving? अच्छा लगा ना? ऐसे हम लाइफ टाइम हम साथ में कर सकते हैं कि अरे हमारा इतना अच्छा जम गया. I said that I want to marry this guy, but फिर भी हमारे रिलेटिव्स में होता है ना कि अच्छा ये लड़का लड़की को पसंद है, लड़के को भी लड़की पसंद है, फिर रिलेटिव्स आते हैं ना, हमारे जो प्यारे रिलेटिव्स होते हैं ना, वो आते हैं पोकिंग करने के लिए, तो एक तो लड़का 6 महीने से पसंद नहीं आ रहा था कोई, और अभी जब पसंद आ गया तो रिलेटिव्स आ गए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, या फिर ये उनके भी साइड में वही हुआ, ये लड़की ऐसी है वो, तो दोनों के साइड से मना हो गया.
बट हम दोनों का जो मैचिंग हो गया था फ्रीक्वेंसी, वो कोई तोड़ नहीं पाया. फाइनली वी गॉट मैरिड एंड बट फाइनल जब सेकेंड टाइम हिज फैमिली केम टू माय हाउस, हमारा जब डिस्कशन हुआ शादी के टाइम, शादी के लिए, माय फादर सेड बेटा अभी तो फाइनल हो गया शादी, डेट भी फाइनल हो गई 19 अप्रैल. तो मैंने बोला जो भी करना है करो, बट मैं शादी हवा में करूंगी. बोलते अभी ऐसा कुछ मत बढ़ा, तेरे इन लॉज के साइड का कोई मानेगा नहीं. तो मैंने बोला जाके पूछ तो लो. मैं आई सेड माय हस्बैंड इज रेडी, जिससे मुझे शादी करने वो बंदा तो रेडी है. बोलते नहीं नहीं, तुम दोनों का रेडी है तो क्या हुआ, फैमिली का होता है, उसकी फैमिली को तैयार नहीं होंगे तो. आई सेड जस्ट गो एंड टॉक. माय फादर इन लॉ सो एक्साइटेड, ही सेड आई एम कमिंग टू पुणे, दे आर फ्रॉम भोपाल. माय फादर इन लॉ केम टू पुणे फ्रॉम भोपाल and he said that kaha hai hot air balloon dikhao and show me how we can do that. I was like, see, this is what you need, you know, that understanding level. And my father-in-law, my father, mother, we went to Mahabaleshwar. वहाँ पे एक बंदा था जो हॉट एयर बलून ऑपरेट करता था, उससे बात करी एंड पूरा ड्रॉ किया पिक्चर एक पेपर पे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट मैरिड. एंड उस बंदे ने बोला कि मेरे पास एक ही बलून है, आई कैन नॉट गेट 2 बलून्स. हमें 2 बलून चाहिए थे, एक बलून में शादी हो रही है और एक में मीडिया इज देयर हु कैन कवर एंड वीडियो शूट चल रहा है एंड ऑल दैट. वेन्यू का डिसाइड नहीं हो रहा था. वेन्यू कहाँ पे, मतलब हॉट एयर बलून से शादी करने करेंगे कहाँ. फिर पुणे रेस कोर्स प्लान किया, गोल्फ कोर्स प्लान किया, कहीं नहीं हो रहा था. देन आई गॉट टू नो अबाउट द ऑक्सफोर्ड का golf course in Lovely. I went to Mr. Shevlikar and he said that yeah you can do here. I was like so stunned. I was very happy. वहां पर किसी clearance की जरूरत नहीं थी because the valley is little 600 feet down. So उस valley के level पे ही हमें fly करना था, 700 feet तक हमें जाना था. तो फाइनल हो गया वेन्यू, बलून दिल्ली से लेकर आए और बलून से प्लान किया. More than me, my in-laws family was so excited that हमारा बेटा बहू हॉट एयर बलून से लेके आ रहा है ना. And I was so happy that I got a understanding family who is more excited to welcome me in that way. Wow. So we planned it and मंगलाष्टका, फेरा, कन्यादान सब कुछ हवा में हुआ. एक हॉट एयर बलून में शादी हुआ और एक हॉट एयर बलून में मीडिया से कुछ लोग थे, हमारा फोटोग्राफर कैमरामैन भी था. And it was amazing experience. So हवा में शादी करना था. बहुत सारे पंडित बोलते ना मैं तो तुम्हारे हवा में भी शादी लगा दूंगा. So we got a pandit who said it and he did it. This pandit also was there with us. वो बोलते हैं कि marriages are made in heaven. I think you also made in air. So it was. And again, Shital, so many pointers are coming from you about your resilience, your fighting spirit, finding a right person with a frequency that I think also the in-laws in India, we face so many issues about not getting the right promotion that a girl needs. It's like we clap for one girl who is doing great, but we don't talk about the 100 girls who could not do because of not getting support. So I think this is something what you're talking about. I'm just speaking some of the pointers other than your amazing journey. Some of the pointers for people to understand is like मतलब chance diya, you have to give yourself a chance. People have to give a chance. I think everything is possible, and I think you are the Jeeta Jagti misal bolte ho na, misal Jeeti Jagti misal for that, Shital. I think it's so wonderful. So Shital, again talking about so many things in your life, but I just want to get little technical because I think you do free falls as well as skydives and multiple aspects. So just because the sports channel as well, people want to probably, this is the way that people can understand the different type of jumps that you have. I've enjoyed doing a couple of dives myself. I have my WhatsApp DP that you must have seen that we chat on. It's actually I'm diving, but it's what all things are there little technically. If somebody wants to follow this as a passion or career or whatever, what are the technical things that are there? See, right now skydiving in India is rising. It's at nuclear stage. Very soon we are starting as a career base. But if anyone wants to do skydiving as a career, I will say there are 4 licenses: A, B, C, D. A license is 25 jumps, B 50 jumps, C 200 jumps, and D is 500 jumps. In that, again, 25 jumps is the biggest achievement. And that 25 jumps, first 9 jumps, or I will say 7 jumps, you have to do that called as AFF level stage.
In that you are assisted by 2 instructors or then 1 instructor. They make sure that after doing a jump from the aircraft, generally we do 12 to 13,000 feet jump, and till for 5,000 feet, 12,000 feet पे आप jump करोगे और 5,000 feet तक आपको free fall करना है. We don't have to open a parachute. That is called as free fall. 5,000 feet पे आपके हाथ में actually आपके हाथ में घड़ी होता है. इस 5,000 feet पे आपको दिखाता है 5,000 feet पे पहुंच के आपको wave off करना है. You have to open your parachute. And once your parachute is open, आपको उसको navigate करके, जैसे साइकिल का हैंडल होता है, ब्रेक्स होते हैं, वैसे ही पैराशूट के टॉगल्स ब्रेक्स होते हैं. वो लेफ्ट राइट करके, if you want to turn right, then right brake, left turn, left brake करके you have to land on decided place. आपको पहले एयरक्राफ्ट से एग्जिट करने के पहले डिसाइड होता है कि कहाँ पे लैंड करना है. तो ये पूरा सिखाया जाता है. बट दैट 7 to 9 jumps, आप instructor make sure that you're conscious enough to open your parachute. वो एक बार आपका रिलायबिलिटी आ गया, देन यू अगर आप एयर में उल्टा पुल्टा कुछ भी हो गया, आपका बॉडी पोजीशन इज अपसाइड डाउन और एनीथिंग, आप स्टेबल पोजीशन में आ रहे हो नहीं. Once you get that stability and all that, in 7 to 8 jumps you get that stability, and if you're ready enough to jump, open your parachute by yourself, they clear you from that levels. Once you start doing your solos without instructor, you can complete your 25 jumps. Once you got your A license, 25 jumps license, after that you can jump anywhere in the world. Okay. After 25 jumps A license, you have to do your B license. B license तक आपको सिर्फ फ्री करने हैं, जंप्स ही करने हैं, to understand yourself how you can fly. There are maneuvers which you need to plan and practice in air till 50 jumps. उसमें भी एक 50th jump के बाद आपको एक वाटर ट्रेनिंग होता है. if you fall in water, in landing के टाइम पे अगर गलती से आप पानी के ऊपर फ्लाई कर रहे हो और पानी में ही लैंड हो गए, तो उसके वाटर ट्रेनिंग होता है बी लाइसेंस के बाद. वंस यू गेट दैट, 100 जंप्स तक आपको फिर से वही प्रैक्टिस करना है कि हवा में मैन्यूवर्स करने हैं, प्रैक्टिस करना है फ्लाइंग का. 100 जंप्स के बाद 200 जंप्स का लेवल, 200 में आपको सी लाइसेंस मिल जाएगा. सी के बाद अगेन आई विल से 100 to 200 के बीच में यू कैन learn to become a coach, or coach, not instructor, coach. You can give other people knowledge about skydiving and all that. After 200 jumps, you can go for instructor rating, or you can go for camera jumps. Then most of the people do skydiving from mountains. Like some people jump from the mountain with the wingsuits and you can fly like this, like adrenaline rush hota hai, and everyone's like, I want to do skydiving like that. But no, for that kind of skydiving from mountain base jumping and all that, you need to complete your 250 jumps. Okay. 250 jumps ke baad you can do wingsuit flying and base jumping and all that stuff. Okay, 250 के बाद 500 तक आप ऐसे बहुत सारे चीजें कर सकते हो जो न्यूबीज, अभी न्यूबी स्टील से 100 to 200 वालों को न्यूबीज कहते हैं, बिकॉज थोड़ा कम नॉलेज होता है. वंस यू गेट योर इंस्ट्रक्टर रेटिंग्स, कोच रेटिंग्स, देन आफ्टर 500 यू आर अ प्रो, गुड. बट उसमें भी रेटिंग्स होते हैं, प्रो रेटिंग्स लेने पड़ते हैं प्रोफेशनल लेवल के. वंस दैट इज देयर, यू कैन, there are many things you can do after 500, and you can go for tandem instructor rating. If you want to earn and learn skydiving, then first become a parachute packer. Uska ek international license hota hai. There are many people who do skydiving but become lazy to pack a parachute like me. So it costs you $7 or $6 in India. I don't know in India, but in other countries it's $7 to $8. So that much you have to pay after every jump. So rigor means the parachute packer, whoever packs the parachute, he gets that much money, and packing takes hardly 20 minutes for a new person, but who are experts, they pack in 3 to 4 minutes. So that is your source of income. You can do it as a packer, you can earn the money, and you can earn whole week and weekends pe jaake skydiving karo. That's what Americans do. They earn by packing parachutes whole week, and weekends they do skydiving from their earned money. So that's another career option. Nice. And I've met those kind of people while I did my dive in the US. So Okay. one of the funny part was the guy who jumped with me, the tandem guy. He's actually a IT professional working Monday to Friday.
in IT company, and weekends he used to come for do that. He told me, I remember one thing, first time when the biggest thing was signing the form that you may die. Okay, that is the first thing. I said, kya sign kar raha hu? Then you go up and he said, this Sid, when you jump out of the plane, if you feel everything is very dark, just open your eyes. Yeah, because you're closing your eyes while free fall. So those are a very small thing, but he just made that dive so comfortable while I did that. So like for me also, I get that kick. I'm also a certified scuba diver. So I enjoy all these kind of things. But yeah, skydive was that gave the biggest adrenaline, and I can imagine 766. I can't even imagine 766. What you have done. In one day, we did tandem jumps, and that was a national record. And in 1 hour, we did 35 jumps. That was a Guinness Book of World Record. So with that, we did it in Spain. Then after that, we went to the Tomatino Festival. And that was a commercial event I organized for this one company. Then after that, I did in April, there are 90 plus women. महिलाओं का ग्रुप है. We are going and doing skydiving. और अभी प्लान कर रही हूँ जो which I quit that one of my dream that I wanted to make 400 women or 400 Indians doing skydiving in a one day. Wow. That's a world record, and very soon that will be also achieved. और क्योंकि इंडिया में किसी को पड़ी नहीं है स्काईडाइविंग कराने की, तुझे ही क्यों पड़ी है? You know, I want women to come up. You know, I want to take Indian women team to that. See, और एक चीज है, लोगों को पता नहीं है इंडिया में, स्पेशल पीपल डोंट नो. जैसे ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है, ओलंपिक कॉम्पिटिशंस होते हैं, ओलंपिक गेम्स है, वैसा ही सी ओलंपिक इज वन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. उसके पैरेलल there is another organization called FAI, Federation of Aeronautic International. These are same parallel organizations जो 100 years से चल रही है. 1905 में FAI establish हुआ है. उसके पहले ओलंपिक एसोसिएशन हुआ है. FAI is established because हवा में जो खेल खेले जाते हैं, जमीन पे जो खेल खेले जाते हैं, उनके लिए ओलंपिक एसोसिएशन है. बट जो हवा में खेल खेले जाते हैं, our ground is sky, उनके लिए FAI बना हुआ है. FAI के अंडर देयर आर 17 स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स, हवा में जो खेलने वाले स्पोर्ट्स है. 13 डिसिप्लिन्स आर, जिसके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, वर्ल्ड कप होता है, नेशनल चैंपियनशिप होती है हर एक कंट्री में. 89 कंट्रीज हु रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन दोस कॉम्पिटिशंस. हमारे इंडिया से कोई नहीं जाता. वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के लिए जाती है मिलिट्री की टीम्स, बट सिविलियन टीम कभी नहीं जाती. सो इट्स माय ड्रीम, आई वांट टू टेक इंडियन वुमेन टीम फॉर दैट कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाट आई एम लिविंग फॉर राइट नाउ. एंड दैट्स द रीजन आई ओपन द एकेडमी एंड थॉट दैट मैं बिजनेस करूंगी, उसमें से कुछ लड़कियां आएंगी, फिर उनको मैं आई विल नर्चर देम, आई विल टेक देम, आई उनको ग्रूम करके आई विल टेक देम इन द टीम एंड आई विल गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया. बट घर में बच्चों को संभाल के, छोटे छोटे मेरे ट्विंस थे यार, ट्विंस को दोनों को संभाल के सारी चीजें हो नहीं रही थी मुझसे ऑनेस्टली. सो आई वाज लाइक ओके, वो सारी चीजें होल्ड पे रख दी. अभी नाउ इट्स टेकिंग द टाइम. यार हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, शादी हो गई, एकेडमी बन गई. जो ड्रीम था कुछ करने का, कुछ फील्ड जो ढूंढ रही थी वो फील्ड मिल गया. बट फील्ड में अभी घर में बैठ के नहीं कर सकते. बच्चों को तो संभाल रही हूँ, बट कुछ करना है. तो 7 कॉन्टिनेंट्स बचा हुआ था. स्काईडाइविंग ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स. ऑलरेडी 5 कॉन्टिनेंट्स हो गया था, 2 बच गया था, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील. तो आई डिड साउथ अमेरिका हो गया एंड साउथ अफ्रीका, दोनों कर दिया. विद इन 3 days आई डिड बोथ द कॉन्टिनेंट्स एंड आई बिकेम फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू डू स्काईडाइविंग ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स. एंड आई अप्लाइड टू FAI. And FAI said that आपके अचीवमेंट के लिए आपको 10 साल लगे हैं. So 10 years का अचीवमेंट we cannot recognize. If you do 6 continents within 1 year, we will recognize. Then I did within 6 continents within 6 months I did. And again see खर्चा कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही रहा है. My husband was like, तू वहां से खर्चा करके आई, फिर से खर्चे का प्लान कर रही है. But still did 6 continents, 6 days, and I got recognized by FAI. I got a gold medal from FAI. For this achievement, I've become first woman in the world who did 7 continents once and 6 continents twice. Wow. And there's so many things that you have around your thing, that first woman to do this, first woman to do that, also the first Indian to do so many things. Like actually nobody has done it. I want women to, I want first Indian woman team got this gold medal for India, or any medal I will say.
Yeah. That is, I want that, and that is my next craze. Like, I don't want next Shital Mahajan did a first woman to do this. I want this this woman team is first Indian team. So that for that I'm right now working off. And And sure, I think with whatever you have done in so many years, I think you will not leave that dream aside. That is for sure. Because you also become the first Indian civilian woman to fly with a wingsuit and all. So I think yes, अभी मैं विंग सूट में ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस ईयर 2022 के अक्टूबर में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली. होप सो आई गेट द स्पॉन्सर्स इनफ टू गेट माय ट्रेनिंग. इट्स ट्रेनिंग इज गोना कॉस्ट मी ह्यूज अमाउंट बिकॉज कोविड की वजह से प्रैक्टिस हुई नहीं है. So looking for the sponsors, and if any sponsors are looking this video, please help me out. For sure. Whatever way we can, I think this is going to reach maximum people, and we'll try and make sure this reaches maximum people. All the viewers and listeners, I think I'm sure they will share it more and more and reach out to Margin for sponsoring, helping. But while we talk about Indian women, and the jumpsuit and everything is fine, but you also jumped in a saree. Yeah. Okay, so what was the thought behind it? It was just okay, Indian woman jumping with a flag in the hand. I think all those things are fine, but jumping in a saree, regular पहन के चलने को तकलीफ होता है, and you actually jumped in with that. How was that? And it looked like a Nawari sari. It's a Nawari sari. Actually, what happened? 2017, I did my 7 continents. They said 6 continents. I completed my 6th continent in 2018. 2018, I got the biggest happiest moment of my life, that I got a gold medal from FAI international. 1984 में JRD टाटा को मिला था गोल्ड मेडल फ्रॉम FAI इंटरनेशनल कमेटी की तरफ से. and I'm second Indian and but first Indian woman who got the gold medal from FAI. I was on cloud 9, but still I was not happy. My father said, अब क्या करना है यार तू, you got a gold medal for India. I said, यार इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा मेरे मेडल को, क्या करूँ पापा. I was literally unhappy. He said, Dad, बेटा एक काम कर, साड़ी पहन. My mother was like साड़ी वॉश किया था, उसको घड़ी कर रहे थे, and he was like, साड़ी पहन के कूद ले जा. I said, good idea. Why not? And मैंने बोला, is it possible? मैं फिर साड़ी पहना, वो नॉर्मल साड़ी में पॉसिबल नहीं था. नौवारी साड़ी पहन के कर सकती हो. My nani was watching all this stuff, and my mother's mother, and she said that तू सच में साड़ी पहन के जंप कर सकती है. मैंने हाँ, because she wears a Nawari sari, and साड़ी पहनने वाले भी जंप कर सकते हैं. So she got inspired at the moment in my house only. I said, if my nani is getting, who's 80-year-old, who's getting inspired, कितनी सारी महिलाएं inspire हो सकती है, you just imagine. And I was like, okay, if I inspire you, I can inspire my nani, who was literally, I said, so-called sweet relatives, was my nani also one of them. शादी कौन करेगा? And she was one, अच्छा मैं भी कर सकती हूँ क्या, kind of feeling she got it. I was like, yes, you also can do it. And I said, if she can get inspired from that sari, मैं साड़ी पहन रही हूँ, parachute पहन के try कर रही हूँ, and she felt it. Said there are many women who can get inspired. Then let's do this. And I went to Thailand and did the jump. But actually वहाँ पर भी बहुत सीन हुआ था. My instructor said no. They said साड़ी is not safe. ये निकल गया, पल्लू निकल गया. I said I will pin up everything. They said what, pin अगर खुल गया तुम्हें टूट मतलब लग गया तो kind of. I said don't worry, let me do this jump. I did the jump. I was super happy. मेडल लेने के बाद भी मुझे हैप्पीनेस नहीं हुआ था इतना जो मुझे साड़ी पहन के हुआ है. The reason because to prove that point, जब पहले भी नॉर्थ पोल जंप करा था ना, that pinch was there, तू लड़की है क्या करेगी शादी करने के बाद, तो यही कर साड़ी पहन के मैं कूद सकती. तो मैं सोचो इंडियन महिला, भारतीय महिला क्या कर सकती है. You can do anything in your life, anything, just think of it and you can do it, and nobody can stop you until and unless you stop yourself. Wow. So that's what I will say. So that's why I did it. Shital, I think your energy is so much. I'm sure that I think this is what you get, the adrenaline there and up in the seat. I think it's the same adrenaline that I get to experience. It's like it's so amazing. But I just want to obviously keeping the time in mind, I wanted to have one. I think because if I go with your experiences, we can have a 3-hour, 5-year, 10-hour kind of chat. But and hopefully we'll do that. I just want to get little philosophical with the whole thing. That a couple of points when you do that, right? What do you learn? The life lessons that you get to do learn while you jump. Just being little philosophical.
Nothing is impossible because many people I've seen. I was operating one group, skydiving group, and one person said that I can do skydiving. This, and before boarding aircraft, it was adrenaline rush was so amazing. Once aircraft started going up, he was like, I don't want to jump. And I exit at the exit time on the door. He said that I don't want to jump. Just take me back. And my policy is that whoever is with me, I will make sure he's jumping. Because it's safe. I know that walking on a road is difficult, dangerous than the walking, doing a skydiving, honestly, because yeah, it's really safe. So that person was holding the door like this, both the side, and he was like, "I'm not gonna go." पीछे instructor है, instructor ने उसको tickle किया, and they did the exit, and they were in free fall, and he said that you did the cheating. The instructor said, "Just look down, you will enjoy it," and he enjoyed. During the free fall under the parachute, he puked, but still after landing, he said that. थैंक यू आपने मुझे टिकल करा अदरवाइज मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता था मुझे नहीं लगा था कि मैं स्काईडाइविंग कर सकता हूँ एंड दैट गाय थैंक मी आफ्टर दैट ही डिड 2 जंप्स मोर सेम डे बट ही डिड इट बिकॉज उसका वो डर चला गया सो लाइफ में आपका डर चला जाता है यू शुड फेस योर फियर्स once you face your fear you can conquer anything in your life that's what I understood from my all journey that whatever holds you back whatever feeling whatever thought holds you back you just do that you will feel more relieved because मरना तो सभी को है कभी ना कभी तो मरना ही है तो वो बैगेज लेके क्यों मरना है वो बैगेज रिलीव करके मरो what do you say so excess baggage don't carry anyways excess baggage of anything means उसने मुझे ये बोला उसने मुझे वो बोला ये हो गया जो भी बोला उसके मुंह पे जाके बोलो कि भाई तूने ये बोला मुझे बुरा लगा but I'm moving on you will feel more relief और किसने कुछ कर दिया भाई तूने ये कर दिया मेरे माइंड में है but I'm forgiving you forgive it and live your life peacefully because otherwise you cannot live your life आप वही दिमाग में लेके चलते हो अरे मुझे वो करना था वो रह गया why रह गया you can do it anytime anything is possible in your life wow and I think this also talks about one of your sponsors in past or present I don't know yeah. Mountain Dew ये डर के आगे जीत है yeah yeah that was going with my tagline for sure because I never had that fear of jumping on anything because I did skydiving on North Pole, South Pole, and वो एक होता है डर दिल में डर होता है कि अगर मैंने किया तो अच्छा भी होगा या बुरा होगा लेट्स फेस द रियलिटी बुरा होगा सोच के जाओ अच्छा हो गया तो फायदा है बुरा हो गया तो यू आर रेडी ऑलरेडी फॉर दैट मेंटली सो दैट डर के आगे तो जीत है सो व्हाई नॉट टू ट्राई Excellent, Shital. I think with there is no better ending or a statement that we can make about Dar Ke Aage Jeet Hai. Your life is about amazing. Just what to say, you're a queen of sky. I think that is what that's what you are, and it's so privileged to host you on the special day of Women's Day, International Women's Day, and get to talk to you. I will say one more thing in my bottom line, like ending quote that डर के आगे जीत है, but that risk you're taking should be calculated. Okay. That if that it should not someone should not say that अच्छा मैं अगर खाई में कूद जाऊँ तो डर के आगे जीते करके don't jump like that with the rope and you should be harnessed properly then you can do that. And I've seen people taking a selfie and jumping in, for the selfie stick taking one selfie in that valley and they're taking the shot they have lost life. So don't be that foolish, so take a calculated risk and take the plunge of faith. I think that is again it's a very what to say a good message. I think while it was ending I think you gave a very sensible and good message about don't get carried away by this stupid thing. We get to see so many accidents and people losing. I think it is good, and that also shows that okay, you're not a jumper all the time. You're also an instructor or a coach who can teach people about the sensibility out of it. So I think it is wonderful. It is. I think it is so good to have you, Shital. Jumper, instructor, mother, like dictator also in the house. Everything. It's a superwoman. It's a superwoman that we have on this day special. Thank you and wish you all the best for so many things ahead of you, which are going to come your way. And looking forward to meet you in person soon and talk about what can be done more towards empowering women and also getting more people to jump from the sky. Yeah, sure. Thank you, Shital. Have a nice day. And thank you so much for inviting and giving me a chance to speak here with your audience. My pleasure.
And happy Women's Day to everyone. Great. Thank you and wish you the same. Yeah. Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle Sportsy Says across all the social media platforms and podcasts.